Good morning, students. I am Mr. Parikshit Rana, your Sanskrit teacher. Last time we have discussed the paragraph number 1 of Unit 2. I have already explained the introduction also, and translation also, and grammar also. Today I have selected a second paragraph of Unit number 2, Yad Bhavishyo Vinashyati. So look here and try to understand the unit or paragraph. First of all, I will read this paragraph. अथ तेषां तत्कुलिशोपं वचनं समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं प्राहुः श्रुतः अयं धीवरः आलापः अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यम् तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्यः प्राह नूनं प्रभात समये धीवराः अत्र आगम्य मत्स्य संक्षयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते तत् न युक्तं साम्प्रतं क्षणमपि अत्र अवस्थातुम् अस्माभिः रात्रौ एव किंचित समीपं सरः गन्तव्यम् अहं तावत् जलाशय अन्तरं गच्छामि. So this is the reading. Now I am going to translate this paragraph, so concentrate your mind here. First line, अथ तेषां तत्कुलिशोपं वचनं समाकर्ण्य. अथ means now, तेषां means them, तत्कुलिशोपं like a thunderbolt, वचनं statement, समाकर्ण्य having listened. So the translation of this line, having listened this statement or words of fishermen, which is compared to a thunderbolt, मत्स्याः परस्परं प्राहु. प्राहु means talk या तो said, और मत्स्याः परस्परं प्राहु. So all the fishermen, having listened the statement of fishermen like a thunderbolt, all the fish talk to each other. All the fish talk to each other. परस्परम मीन्स ईच अदर. उन लोगों ने क्या बात की? फिशरमैन ने डिसाइड किया कि कल हम सुबह यहाँ आते हैं और सभी टॉर्टॉइस और फिश को मार देते. तब उन लोगों ने अंदर बात की, और बात करने से क्या, कौन सी बात की? श्रुतोऽयं धीवरः आलाप. हैव यू लिसन द कन्वर्सेशन ऑफ फिशरमैन? अधुना मीन्स नाउ, अस्माभिः मीन्स वी, किम कर्तव्यम what we should do. So अधुना अस्माभिः किम कर्तव्यम, now what we can do, what we should do. अब हमें क्या करना चाहिए? तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्यः प्राह. Then the fish name अनागत विधाता प्राह means said. उसने क्या कहा? नूनम प्रभात समये धीवराः अत्र आगम्य मत्स्य संक्षयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते. इति मम मनसि वर्तते means I believe that. मत्स्य संक्षयं means killing of fish. अत्र आगम्य coming here. धीवराः fishermen, प्रभात समय in the morning. So I believe that in the morning all the fishermen came here and killed all the fish. Look here. Tata na yuktam. It is not proper. Sampratam, at present. Kshanamapi, at any moment. Atra avasthatum, to stay here. So it is not proper to stay here at present, at any moment. अभी कोई भी क्षण यहाँ रहना ठीक नहीं है.
अस्माभिः रात्रो एव किंचित समीपम सरः गंतव्यम. अस्माभिः means we should go to another lake. Sarah means nearby lake, another lake during the night. Aham tavat jalashayantaram gacchami. Then I am going to another lake. Okay. So this is the translation of this paragraph. Actually, after completing this unit, I will send the PDF of translation. So don't worry. Now about grammar. Grammar is very important here. In each and every paragraph, there are some words of grammar. I have already underlined all those words. So look here. The first word is a sandhi. I am going to write here. Look here. Sruto ayam. Srutah plus ayam. So according to the rules of sandhi, visarg sandhi, if after visarg there is a and before visarg there is a, श्रुता त बोलते हैं तो यहाँ अ सुनाई देता है, बराबर. तो if before visarg and after visarg then this is turned into o. यहाँ पर देखो श्रुतो हो गया, turn into o, and this turn into avagra. This is a avagra. This is avagra. Okay. So Sruto ayam. Now the second word, kartavyam. Last time also I have already discussed about this. If tavya, tavya or tavyam is there, means it is a vidyarth krudan. So this is a vidyarth krudan. Now Prabhat Samaye. I have also last time I have also discussed this. Samaye, in the morning. In word is there, so that it is a Saptami Ekvachan. Okay? So Prabhat Samaye means in the morning, Bale, in the boy, Rame, in the Ram. So in word आया, इसीलिए वह सप्तमी एकवचन. Okay? Now this is also krudant. Atra plus agamya. If swa, tya and ya is there, here mya is there. Okay? If according to the rules, if suffix twa, tya and ya is there, it means it is a sambandhak bhut krudan. Look here. यहाँ पर तो म्य है और मैंने यहाँ पर लिखा है त्य, पर वो कोई भी हो सकता है. त्य, प्य, म्य, फ्य, कुछ भी हो. कॉन्सोनेंट के साथ य जुड़ा हुआ हो तो वह संबंधक भूतकृदन कहलाता है. और वो किसके साथ? वर्ब के साथ. आगम्य मीन्स कमिंग. कमिंग इज अ वर्ब. कम इज अ वर्ब. ओके. तो वो नाउन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, पर किसके साथ? आगम्य, म्य जो जुड़ा हुआ है वो वर्ब के साथ है. सो दैट इट इज अ संबंधक भूतकृदन. लुक हियर. दिस इज ऑल्सो कृदन. इफ तुम सफिक्स इज देयर, ये तुम को देखो, अवस्था तुम. इफ तुम सफिक्स इज देयर मीन्स इट इज अ हेतुवर्थ कृदन. कीप इन माइंड, इफ तुम सफिक्स इज देयर इट इज अ हेतुवर्थ कृदन. Okay, so this is a Hetvarth Krudan and this is a Sambandhak Bhut Krudan. Here also Tavya word is given. Tavya, Tavya, Tavyam. मैंने आपसे कहा था कि Tavya है masculine gender, Tavya feminine gender and Tavyam neuter gender. So Gantavyam is a word of neuter gender, but Tavya is there so that it is a Vidyarth Krudan. Okay. Now this word, Jalasayantaram, this is a samas. When I have discussed samas, at that time I have explained that if there is a antaram word, ये word के पीछे अंतरम आए तो वो कर्मधारय समास कहलाता है. Okay? So Jalasayantaram, antaram, so that it is a कर्मधारय समास.
भाषांतरम कर्मधारय समास, युगांतरम अंतरम वर्ड पीछे आया इसलिए इट इज अ कर्मधारय समास. अब लुक हियर, अहम गच्छामि, दिस इज अ प्रेजेंट टेंस. अहम gachami, I have already written the suffixes of present tense. There are, present tense means vartman kal. There are two types of vartman kal, parasmay pad and atmane pad. So here me, gach means to go. Go को क्या लगा हुआ है? me. This suffix me. Okay. तो aham is a first person singular, so that the first person singular suffix is used. देखो यहां पर अहम है इसीलिए गच के साथ मी सफिक्स लिखा हुआ है. आई एम गोइंग, आई गो. पर इफ यहां अहम की जगह फॉर एग्जाम्पल सह, सह सफिक्स इज देयर, अहम की जगह सह आए तो यहां पर कौन सा सफिक्स आएगा? लुक हियर इन द टेबल. सह मीन्स ही, सह मीन्स he, sa means she. तो यहां पर सह means he is a third person singular, he is a third person singular, so that here third person singular suffix is used. यहां पर हम सह तावत जलाशयम गच्छामि नहीं लिख सकते. सह तावत जलाशयांतरम गच्छामि is a wrong line. Because saha is a third person singular, so with gaccha, t suffix is used. Okay, t. So this is the correct sentence. Saha tavat jalasayantaram gacchati. Okay, in place of saha, I write छात्राः. Okay, छात्राः is a plural. Students, not one student but बहुत सारे students. So छात्राः is a third person plural. they आता है ना यहाँ. छात्राः means they, all the students, all the students. So छात्राः is a third person plural, so that third person plural suffix is used. So छात्राः तावत् जलाशयांतरम गच्छन्ति, यहां पर आएगा गच्छन्ति. ओके, करेक्ट. अंति, गच्छन्ति, because the subject is plural. So these all the verbs are depend on the subject. अहम फर्स्ट पर्सन हो तो मी, फिर प्लूरल हो तो अंति, and he she it हो तो टी. ओके, अब आपको लगा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परस्मय पद एंड आत्मनेय पद, इज अ क्वेश्चन. ओके, सो गच मीन्स टू गो, गच मीन्स टू गो. सो गच इज अ वर्तमान काल परस्मय पद. गच इज अ रूट ऑफ वर्तमान काल परस्मय पद, so that the suffixes of वर्तमान काल परस्मय पद are used. अगर ये गच की जगह लब होता, लब, तो लब इज अ रूट ऑफ दिस, लब इज अ रूट ऑफ आत्मनेय पद. एवरीथिंग इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक ग्लॉसरी. सो लब इज अ रूट ऑफ आत्मनेय पद, so आत्मनेय पद suffixes are used. We can't use the suffixes of परस्मय पद. ये लब है इसीलिए यही यूज होते हैं. अगर गच ये परस्मय पद का रूट है इसीलिए ये सफिक्स यूज होते हैं. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम एंड आई विल सेंड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस यूनिट. सो डोंट वरी, प्रिपेयर एवरीथिंग, watch this video carefully, learn everything, and do not forget to subscribe my channel so you can get the notification of each and every video. Thank you very much.